Guys, Eid Mubarak. So today's makeup tutorial is going to be on Eid. So मैंने बहुत ही प्यारा सा आई मेकअप और मेकअप ट्यूटोरियल आप सबके लिए बनाया है. In case you have any questions, please make sure you comment down below and let me know. And I will be more than happy to answer your questions. Now this is a very beautiful full coverage party Eid makeup. और ये simple नहीं है, थोड़ा सा extra steps लगेंगे इसको करने के लिए. But if you keep following me, I pretty much sure you will be able to create this look very easily. So without wasting your time, let's get started and let me show you guys how I created this Eid makeup look. Now skincare part is already done. I always like to first of all do a skincare things like washing my face, applying the moisturizer and applying the serums, but after that only I go and do my base makeup. And in today's makeup tutorial I will be first of all doing my eye makeup. So for my eye makeup, first of all I'll be starting with an eye primer. So for eye primer today I'm using a pretty vulgar eye primer, just taking a very little bit amount, like a pea size amount at the back of my hand, और उसको मैं हल्का सा अपनी फिंगर्स से रब करूँगी. रब इन द सेंस ताकि थोड़ा सा वार्म अप हो जाए. एंड देन वंस इट इज़ लिटिल बिट वार्म्ड अप आई विल बी अप्लाइंग इट ऑन माई आईलिड्स. आईलिड्स पे अप्लाई करने से पहले मेरी आइज़ पे जो एक्स्ट्रा ऑयल है मैं उसको भी हटा रही हूँ. यू कैन यूज़ अ क्लीन कॉटन और क्लीन क्लोथ. तो मैंने उसको हटाया एंड देन आफ्टर दैट आई अप्लाई द प्राइमर. देन आई एम गोना लीव इट ऑन फॉर कपल ऑफ सेकेंड्स ताकि वो सेट हो जाए. नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर आईब्रोज. सो फॉर आईब्रोज टुडे आई एम यूजिंग अ NYX eyebrow pencil in the shade dark brown. First of all I will be brushing my eyebrow hair in the upwards direction and then using the other side of the eyebrow pencil I will be start filling my eyebrows. मैं बहुत ज़्यादा bold eyebrow look पसंद नहीं करती हूँ and I don't suggest this to anyone as well. Just like to keep it natural and simple. Now once the eyebrow is done, to clean the edges I have applied little bit concealer on a pointed eyeshadow brush and then उसको यूज़ करके जितना भी मेरा जो एजेस हैं आईब्रो के मैं उसको क्लीन करूँगी. अगर जस्ट इन केस कहीं पे थोड़ा सा बाहर निकल गया या कुछ है, उससे हमारे जो आईब्रोज हैं थोड़े एजी और पॉइंटेड भी लगते हैं. Once the eyebrow is done, let's get started with the eye makeup. So for eye makeup today I am using a Desert Dusk palette from Huda Beauty and I'm going to be taking a saffron color from this palette and I will be using this color on my crease to create a little extra space on my crease and just to depth in my crease line. So just applying little bit this color on my crease and then using a clean brush I will be blending it out. सेम चीज़ मैं दूसरी तरफ भी कर रही हूँ. थोड़ा सा कलर लेके एक्स्ट्रा को मैं डस्ट आउट करके अपने क्रीज पे लगाऊंगी और हल्के हल्के सर्कुलर मोशन में उसको अप्लाई करूँगी. एंड देन यूजिंग अ क्लीन ब्लेंडिंग ब्रश फ्रॉम मैक आई विल बी ब्लेंडिंग आउट द एजेस एंड सॉफ्टन द एजेस ऑफ माई आई शैडो. On the other eyelid I will be using the color called as Desert Sand, जो कि हल्का सा whitish color है और उसको मैं अपने बाकी जो remaining eyelid है मैं वहाँ पे अप्लाई करूँगी using a flat shader brush. ये एक तरह से ऐसे भी लगता है कि जैसे मैंने full cut crease किया है and that's why I'm just applying this shade to give a little more depth to my crease line. Doing the same thing on the other side. आप चाहें तो कंसीलर भी यूज़ कर सकते हैं, कट क्रीज कर सकते हैं, बट आई एम डूइंग दिस सो दैट लिटिल मोर लाइन और लिटिल मोर डेप्थ इज़ एडेड ऑन माई क्रीज लाइन. Once that is done I'm going to be moving forward to the next color. So I'm taking a next color from the same palette which is called as Nefertiti. That I hope that is how you pronounce it. तो मैं इस कलर को लेके इसमें थोड़ा सा शिमर भी है. यूजिंग अ फ्लैट शेडर ब्रश मैं इसको अप्लाई करूँगी ऑन द सेम एरिया वेयर आई अप्लाइड द डेजर्ट सैंड जो लाइट कलर था. उससे क्या होगा, वो पूरे पार्ट में शिमर ऐड कर देगा एंड इट्स गोना गिव अ लिटिल ग्लिटरी शिमरी इफेक्ट ऑन आवर आइज़. और क्योंकि हमने नीचे ऑलरेडी लाइट कलर ऐड किया था तो उसके ऊपर ग्लिटर ऐड करने से वो और ज़्यादा कलर को पॉप अप करेगा, डेप्थ ऐड करेगा और वो अलग से खिल के आएगा और दूर से दिखेगा. सो दैट्स व्हाई आई लाइक डूइंग दिस. In case you don't have a brush you can also apply this color using your fingers. तो इसलिए फिंगर टिप्स पे भी हल्का सा लगाओ और उसको अपने कलर को अप्लाई कर सकते हो. नाउ इन माई अंडर आइज़ जो कि थोड़े बहुत हमारे आई शेडो के पार्टिकल्स नीचे गिरे होंगे, आई अप्लाई लिटिल बिट मेकअप रिमूवर एक क्लीन कॉटन पे और उसकी हेल्प से मैं उसको रिमूव कर रही हूँ. नाउ फॉर आई लाइनर टुडे आई हैव टेकन अ इंक जेल आई लाइनर विच इज़ वन ऑफ माई फेवरेट आई लाइनर एंड यूजिंग दिस आई एम गोइंग टू बी अप्लाइंग अ वेरी स्मॉल आई लाइनर वेरी क्लोज टू माई लैश लाइन. मैं
बहुत ज़्यादा विंग नहीं क्रिएट करूँगी आज, बट थोड़ा सा अप्लाई करूँगी। आई लाइनर इज़ लाइक वन ऑफ माई फेवरेट प्रोडक्ट्स। ये पहली बात तो वाटर प्रूफ है, ट्रांसफ़र नहीं होता, स्मच नहीं होता, सो रियली गुड product to use on your clients as well. Once the eyeliner is applied, I'm going to be curling my eyelashes and then using a Lily Lashes mascara. मैं mascara लगाऊंगी दोनों eyelashes पे. Gently I will be spending time, and you can do this step even after applying the false eyelashes also, but I like to apply mascara before applying the false eyelashes. And for the false eyelashes today, I'm using a Black Label eyelashes in the shade Brazen. Today for foundation I'm using a Makeup Revolution foundation. ये कलर बहुत ही क्लोज है मेरे स्किन टोन से और बहुत लाइट वेट फाउंडेशन है, इस वजह से मैं इसको अप्लाई करती हूँ. एंड देन जेंटली आई एम गोइंग टू बी अप्लाइंग इट ऑल ओवर माई फेस एंड नेक एरिया, एंड देन यूजिंग अ डैम्प ब्यूटी ब्लेंडर आई विल बी ब्लेंडिंग दिस फाउंडेशन इवनली ऑन माई फेस एंड ऑन माई नेक एरिया. Now I will be using two concealers, one from Milani, one from Makeup Revolution. जो मिलानी का कंसीलर है वो थोड़ा लाइट है, वो मैं यूज़ करूँगी अपने अंडर आइज़ और अपने फेस के कुछ पार्ट्स को हाईलाइट करने के लिए. और जो दूसरा कंसीलर है वो है मेकअप रेवोल्यूशन से, उसको मैं यूज़ करूँगी अपने अंडर आइज़ पे को कंसील करने के लिए और जो भी पिगमेंटेशन है उसको हटाने के लिए. So I'm going to be applying both of these concealers under my eyes and on the areas where I want to highlight. And then once that is done, using a Forever 47 ब्रश जो कि फाउंडेशन और कंसीलर ब्रश दोनों हैं, मैं उससे अपने कंसीलर को ब्लेंड करूँगी. आप चाहें तो डैम्प ब्यूटी ब्लेंडर भी यूज़ कर सकते हैं. Once that is done, I'm going to be using a NYX loose powder, and I'm going to be little bit baking my under eyes and also those parts where I've applied the concealer. Once the baking is done, I will be removing all the extra product under my eyes. कॉन्टो के लिए आज मैं लॉरियल पेरिस का कॉन्टो स्टिक यूज़ कर रही हूँ. आई एम गोइंग टू बी अप्लाइंग इट ऑन द हाई पॉइंट्स ऑफ माई चीक्स, ऑन माई जॉ लाइन, ऑन माई नोज, forehead और लिटिल बिट ऑन माई लिप एरिया एज वेल. एंड देन यूजिंग अ कॉन्टो ब्रश आई एम गोइंग टू वेरी जेंटली ब्लेंड इट आउट. कॉन्टो करने से क्या होगा, मेरे फेस के जो फीचर्स हैं उनको और इन्हांस करेगा और ज़्यादा शार्पन दिखाएगा. सो दैट्स वाई आई लाइक टू कॉन्टो माई फेस अ लॉट, एंड इट ऑल्सो गिव्स यू अ वेरी नाइस चिजल्ड इफेक्ट. Using a bronzer from City Bronzer, that is from Maybelline, और उसको भी मैं हाई पॉइंट्स ऑफ माई चीक्स पे और लिटिल बिट अपने जॉ लाइन पे लगाऊंगी, क्योंकि मेरे को अपने चेहरे पे थोड़ी सी वार्म लाना है, वार्म इफेक्ट चाहिए. सो दैट्स व्हाई आई एम डूइंग इट. फॉर ब्लश टुडे आई एम यूजिंग अ लॉरियल ब्लश, और इसको मैं एप्पल ऑफ माई चीक्स पे लिटिल बिट ऑन माई नोज टिप और अपनी चिन पे लगाऊंगी. Highlighter today I'm using a elf highlighter. I'm going to be applying it on the high points of my cheeks, on my brow bone, or also on the inner corners of my eyes. Now I'm going to be using a NYX pencil in the shade white, and I'm going to be applying it on my waterline just to open my eyes. Now once that is done, under my waterline I'm going to be applying the color saffron just to highlight the lower lashes. Then also apply a little bit mascara on the lower lashes. And for lipstick today I'm using a lip liner from Wet n Wild and a lipstick from Forever 52. All the shades are mentioned down in the description box, so make sure you check it out. So first of all I will be outlining my lips just to create a line or a boundary that this is where exactly I want to place my lipstick. And then using a Forever 52 lipstick I will be applying the lipstick. Now here completes my makeup tutorial, you guys. And the jewelry which I'm wearing is from
want to wow, I guess, and I have mentioned everything on the description box, so make sure you check it out. If you have any questions, please make sure you comment down below. I will be more than happy to answer them. And here completes our look. I hope you guys enjoyed watching this tutorial. I'll see you guys super soon एक नए tutorial के साथ, but please till then take care, stay safe, and don't forget to subscribe to my channel, and also follow me on all my social media handles. The direct links are mentioned down below. But till then, take care, stay safe, and Eid Mubarak. Bye.